हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। एंड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट हम लास्ट वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो। Let's start with our first problem. Find the value of resistance X in the circuit so that the junctions M and N are at the same potential. Here M and N both are junctions and दोनों का potential same है. Hence इस middle arm में, that is MN arm में कोई current flow नहीं करेगा. So this circuit represents balanced Wheatstone bridge. As no current flows through the middle arm Mn, so the circuit represents a balanced Wheatstone bridge. Hence ratio of x upon 15 will be equals to ratio of 2 upon 5. Therefore x upon 15 will be equals to 2 by 5. So यहाँ से x आ जाएगा 2 by 5 into 15 and ये cancel हो जाएंगे. So we have x equals to 6 ohm. Now second problem we have is the galvanometer in each of the two given circuits, that is these two circuits, doesn't show any deflection. Find the ratio of the resistors R1 and R2 used in these two circuits. Now in circuit 1 जो galvanometer है ये कोई deflection show नहीं कर रहा. Hence जो ये Wheatstone bridge का circuit है, this is in balanced condition. So we can write, so in circuit 1 Wheatstone bridge is in the balanced condition. So we can write 4 by R1 will be equals to 6 by 9. So from here R1 will be equals to 4 into 9 by 6. So after simplification we will get R1 equals to 6 ohms. ये cancel हो जाएगा. Sorry. 3 3 the 9, 3 to the 6, 2 1 2 2. So 3 into 2 is 6 ohm. So from here we get R1 equals to 6 ohm. In circuit 2 यहाँ पर galvanometer और बैटरी को इंटरचेंज कर दिया गया है. एंड हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब हम galvanometer और बैटरी को इंटरचेंज करते हैं तो जो Wheatstone ब्रिज है उसकी बैलेंस कंडीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. Hence in this circuit also we have 6 by 12, that is this by this, will be equals to R2 by 8. So from here R2 will be equals to 6 into 8 by 12. ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ. So after cancellation 6 to the 12, 2 4 the 8, we get R2 equals to 4 ohm. And question में हमें रेशियो निकालनी है of R1 and R2. So we have R1 by R2 equals to 6 by 4 and this is equals to 3 by 2. So the required answer is 3:2. Now third problem we have is four resistances of 15 ohm, 12 ohm, 4 ohm and 10 ohm respectively are connected in cyclic order to form a Wheatstone network. Means यहाँ चार resistances को cyclic order में लगाया गया to form a Wheatstone network. So इसे draw कर लेते हैं पहले. So we have four resistance in cyclic order. So this must be 15 ohm and this is 12 ohm, 4 ohm and 10 ohm. And let it be P, this is Q,
this is R and this is S, and let this point be A, B, C and D. Is the network balanced? हमें चेक करना है कि जो ये नेटवर्क बना है ये बैलेंस्ड है या नहीं. Now P by Q is equals to 15 by 12, this upon this, and इन्हें डिवाइड करके आएगा 1.25, and R by S is 10 by 4, so we have 2.5. Now since P by Q is not equals to R by S, क्योंकि यहाँ 1.25 आ रहा है, यहाँ 2.5, hence we can say कि जो ये ब्रिज है या ये जो नेटवर्क है this is not balanced. Since P by Q is not equals to R by S, therefore the bridge is not balanced. अब आगे क्या करना है? If not, calculate the resistance to be connected in parallel with the resistance of 10 ohm to balance the network. अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इस रेजिस्टेंस के साथ हमें कितना रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाना पड़ेगा सो दैट ये नेटवर्क बैलेंस हो जाए. सो हम अज्यूम करते हैं कि जो रेजिस्टेंस हमें इसके साथ पैरेलल में लगाना होगा, लेट इट बी एक्स. लेट द रेजिस्टेंस X to be connected in parallel with the 10 ohm resistance to balance this network, and let R dash be the effective resistance between the points A and D. Then we can write that 1 by R dash will be equals to 1 by 10 plus 1 by X, because हमने रेजिस्टेंस को X राइट किया जिसको इसके साथ पैरेलल में लगाना है, और हमने ये एज्यूम किया कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा R डैश के इक्वल. अब क्योंकि ब्रिज जो है वो बैलेंस है, since the bridge is now balanced, so हम लिख सकते हैं that P by Q will be equals to R dash by S, this R dash, and यहाँ से R dash आ जाएगा equals to S into P by Q. This is after cross multiplication. Yes, इधर चला जाएगा. Now substituting values, S is 4 ohms and P is 15 and Q is 12. So after simplification we have R dash equals to 5 ohm. This is 4 3 the 12, 3 5 the 15. So we have R dash equals to 5 ohm. अब यहाँ से R dash आ गया 5 ohm. अब इस 5 ohm को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे and we will find the value of X, जिसको हमें इस रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में लगाना है to balance this network. Now substituting this 5 ohm in this equation, we have 1 by 5 equals to 1 by 10 plus 1 by X, or we can write 1 by X equals to, ये उधर चला जाएगा, subtract हो जाएगा, 1 by 5 minus 1 by 10. Now LCM will be 10. Here we have 2 minus 1. So यहाँ से 1 by X आ जाएगा हमारा equals to 1 by 10, which implies that X equals to 10 ohm. So हमें इस नेटवर्क में 10 ओम के रेजिस्टेंस को इस R रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में लगाना होगा, एंड हेंस जो ये नेटवर्क है ये बैलेंस्ड हो जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. सो आज की वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करे बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज. आई होप कि आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो गया होगा. आई रियली होप दैट यू ऑल लाइक दिस वीडियो. सो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो न्यू कंसेप्ट के साथ. टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड टेक केयर. थैंक यू.